Okay, so I hope you are aware about the functions from C++ classes. Okay, so may I know how who can give the answer about the function? Anything, whatever you know about the function, can you tell me the functions? Anyone? Anything? Mm-hmm. हेलो। हाँ हाँ, या प्लीज टेल मी। तो सर फंक्शन तो बेसिकली इसलिए यूज होता है कि क्या जो लार्ज कोड होता है ना हम्म। उसको रीयूज कर सके बाद में, हम्म। इसलिए यूज करते हैं हम। ठीक और है। दूसरा फंक्शंस को हम कोड ताकि भारी वो बड़ा ना हो जाए ज़्यादा, हम्म। तो इसलिए वो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ओके ताकि ओके कोड की रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेंस बढ़े। हम्म। ओके, ठीक है ठीक और है, ओके। दूसरा फंक्शंस। ठीक है, ओके, दैट इज ग्रेट। ग्रेट मींस यू गाइस आर अवेयर अबाउट द फंक्शंस। ओके, सो अभी हम जावा में पढ़ने जा रहे हैं। जावा में भी सेम ही है फंक्शन, बट इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक तरीके का मेथड भी होता है, विच इज कॉल्ड मेथड। ओके, सो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है। लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग एज नोट्स। फंक्शन फंक्शन is is called a method। ओके, इसको मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो ये होता क्या है, लाइक दैट कि सी ए मेथड मतलब कि मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ओके, ए ब्लॉक ऑफ कोड which is performing the task performing the task according to their according to their logic। ओके, ये होता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, you can write it once in a method। ओके, जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, उस मेथड की जब जरूरत पड़ेगी जब हमको कॉल करना रहेगा। ओके, लेट्स हैव वन बेसिक एग्जांपल। ओके, लाइक ठीक है, ओके, जस्ट हैव सिंटैक्स सिंटैक्स लाइक integer and that is a function name which is also called method name। Okay, so add, we can take add। Okay, here we will provide some parameter like int a comma int b। Okay, so this is the open curly braces and closing curly braces. Whatever we are writing some piece of code, then we are returning something, return a plus b kind of thing, anything। Okay, so in this piece of in this block, whatever you are writing the code, this is performing some actions, this block of code। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे int, what is the int here? Int is basically return type। Okay, add, what is add is basically method name. What is int a and int b? Int a comma int b, int a and int b basically parameter। Okay, parameter, and whatever the writings are there, we have returning the things according to calculation, it will return the value। Okay, so this is a whole about function, just basic the things about the exam functions। Okay, and according to their properties, uh,
Let's have one example method without parameters. Okay, first example, let's see. First example, method without parameter. Method without parameter. Parameter. Okay. So like here we will write public class main. Okay. So we will provide here static void greet. Just I'm giving you one example basically. Okay. Once what like जैसे जैसे आप लोग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसमें फंक्शन समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, semicolon is must. We are closing this method name. Okay, with curly braces. We are starting from main main functions, which is called public static void main. Okay, string s capital, string with their array and arguments. Okay, and here we will what we will do, greet. We are call here what we are doing, we are calling the methods. Okay, let's have a implementation, otherwise it will take more times. Okay, let's make one dot java. Okay, so what we are having, public class, public class example. Okay, and we are going to write the program for static. Static is a kind of keyword. We will study about the static keyword later in the oops classes. Okay, this is just an example which I am explaining here. System dot out dot print ln hello world. Okay. After then here public static void main arguments. Okay, I'm just calling here the function. Okay, nothing we are doing. So this is the program. I think we are getting some error. This is syntax error. What is this? I think this is example. Okay, let's have let's compile and run. Yeah. Okay, cd day 17.
Java, Java C example dot Java. Okay, so it is taking some times. We have to wait. We have to wait for some times. Oh my God, this is something problem. Okay, again I'm providing same command for compiling this code. Okay, so it is successfully compiled. Let's have run, compile, and run this code. Okay, as you can see here, it is printing hello world. Just what we have done, we have created, this is the function with name, greet, with static. Okay, and here we are just calling the functions. Okay, see here we are normally calling the greet. Okay, greet function. Okay, so guys, is it clear? Hmm? See, just like we have created a static void means nothing, and greet just like name functions. Okay, I'm just here, what I did, I'm just printing something. Just in the C++, you are guys using C out for printing, or showcasing the string over the, like in the terminal. Okay, or the output box. So in the Java we are using system.out.println. Okay, after then we are just coming in the main functions. In the main function we are just calling this greet method. Okay, this functions and nothing we are doing. Okay, for about the static keyword we will study later in the oops classes, object oriented classes. Okay, so let's proceed further for the next. Okay, so we can take one more example where we are returning the value. Okay, let's have one more example. Hmm, example 2. Okay, what's the example 2? Method method with parameter and return value, and return value. Okay, we are going to direct over the IDE where we can perform the example. Okay, otherwise it will take too much time. Example 2, example 2. Okay, dot Java, example 2 dot Java. Okay, no problem. All right, so we are going to again static, we are taking in this time int it is return type. Okay, add kind of method name. We are providing two argu parameters, a and int b. Okay, what we are doing, just normally returning a plus b. Okay, okay, in the C++, what we are doing, we are creating separate functions for the addition, and below we are creating separate function for main function. Okay, so in the Java, what we are doing, in the same class we are creating the functions with static. Okay, and we are returning the value. Okay, according to their addition logic, and here we are inside the class we are creating main function, which is starting from public static void main. Okay, string with their array and arguments.
We are taking one variable which is result is equal to add what is this, just like nothing but method name. Okay, 10 what is this, we'll provide 12. Okay, providing some semicolon after then. Okay, SOUT, just like this is shortcut. Okay, SOUT you can use for writing shortcuts. This is means system.out.println. Okay, so here, as you can see here, previously we are not returning anything in this example. That's why we are using return type was void. Void means nothing. We are not returning anything because we are printing something over the console. Okay, so here it was printed hello world. So in this example too, we are writing in the return type integer. This return type is integer and method name is addition. We are adding two numbers, and in the parameter we have provided two parameters, integer a comma integer b, as here we are just simply returning the values. Okay, and below we have created main functions, and we are uh, in the we have called functions name and also provided some parameters value and stored in the result, and we are printing this result value, this result variable. Okay, let's see what kind of value can come. Let's compile this code. Okay, let's have run this. Okay, so okay, so for the addition, is it correct? Okay, 10 plus 12, it is becoming 22. So guys, till here, is there any questions? Any questions so far? If you have guys any question, you can ask me. Otherwise, we can good to go proceed further. Mhm. Okay, so I hope there is no questions so far. So No question, sir. okay, okay, that is great. Thanks for confirming. We are proceeding further. Okay, thanks Vineet for confirming. Uh, see, we are going to talk about parts of methods. What kind of methods are there? Parts of methods. Okay, so let's change the ink. Okay, so first is what? First is static. We are just going to talk about each and every kind of method, and we will talk about just basic overview about the parts of methods. Okay, so first we are talking about static. Okay, so static means, so static basically this method is belongs to as a class and be called without creating an object. Okay, where we don't need to create an object. So this is about the static. So that's why I'm just going to give you the basic overview. Okay, so here we can write the method. The method belongs to the class, belongs to the class and can be called, and can be called can be called without creating an object, without creating an object. Okay, this is about the static. Okay, let's talk about second one, int. So integer is basically, this is like return type. See what we will just simple type here, return type, return type. Okay, so what about this one?
So basically methods will return an integer. Okay, ठीक है, okay. Let's talk about third one. Third one is basically add. What is add? I'm just talking about below. No, sorry. Above examples. Okay. So add is basically method name. Okay. This is method name. Okay. And fourth one I'm talking about, that is parameter. Integer A, comma, integer B. Okay. Parameter. So we can also that input to the method. Inputs for the methods. Okay. That's why I'm explaining here in depth. If anyone will see this video, anyone will be understand. Okay. So fifth one is return. Returns what? What is the purpose of return here? A plus B. Okay. So here returning the result. Returns the result to the caller. Okay. This is this is whole about the parts of methods. Okay. Let's talk about types of method. Okay. So here we are going to talk about type of method. So basically type of method. First one is method. Method with no parameter. With no parameter. Parameter and no return value. And no return value. Okay. This is the first thing. So what we can do, we can just write just one small example. White display. Okay. And we can print something like print welcome. Okay. We can write just I'm shortcut. We are writing print in the Java. We are writing system.out.println. Okay. Just shortcut. We are writing print. You can understand, guys. Okay. So second one is like method with parameter but no return value. Method with parameters. Parameters but no return value. No return value. Okay. So here we are just giving you one a small example. Void greet, here string name, we can say that. Okay. So we are just printing here hello, hello plus name. Okay. Method with parameter but no return value. Okay. This is also a kind of method. Okay. So we as we can see that in the previous example we have provided the value in the addition
from the main function. So this is also a kind of example. Okay, I hope you can understand. If you will create with this example, if you will create, uh, if you will give the name from the main method, so it will receive the value. Accordingly, it will be print. Okay, in the case of string. And third one is method with parameter and return value. Methods with parameter and a return value. Okay, so let's have a one small example. Integer, square int num. Okay, what we are returning something, num into num. Okay, okay, so this is the three types of methods. Okay, so I hope everyone got understood. So have you guys ever thought about why we are using methods? Anyone can give me the answer, any answer about why we are using the methods? Keshav, do you have idea about why we are using the methods? Anything you can give me, whatever you know. Hmm? I'm audible to you guys. I'm audible to you guys. Vinit, Keshav. Yes, sir. Okay, Audible. okay, okay, okay. No problem. We'll good to proceed further. So one of the also a greatest point why we are using methods. So here, let's go to why use methods. Methods are function that is there. Okay. So why we are using? So basically, avoiding the repeating code, avoid the repeating code. Okay. Second thing is make program easier to read and maintain. Okay. Make program easier to read and maintain. As Vineet has explained, that is the same point. Nice. Okay. And third one is like suppose that we are having large amount of code, so we can break down into the smaller piece. We can create small functions, and those particular functions we can reuse. Okay, we can call somewhere. Okay, so what we can say that break the large program, break the large problem large problem into into smaller chunks. Okay, smaller chunks and reusable. Okay, and fourth one is improving improving code
quality, we can say that organization. Okay, this is the 4 point. That's why we are using the methods. Okay, so basically in the simple terms we can say that like whenever we are having the like reusable in the Java, so we are having the reusable block of code that is performing a specific task. Okay, once you have defined, then it can be called whenever you are needing it. Okay, anything code, सपोज दैट जो भी बड़े बड़े यहाँ पे जावा बैकएंड के कोड चलते रहते हैं ना, तो ये सब सारे जो है मेथड बेस्ड ही रहते हैं। ओके, उसी मेथड में एरे भी यूज कर लिया, स्ट्रिंग भी यूज कर लिया, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज को यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है मेथड एक पावरफुल बन जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जावा बैकएंड डेवलपमेंट में। ओके, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब अभी मैं इसीलिए थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्लियर कर रहा हूँ। ओके, कवर करते चल रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेज, Keshav, I wanted to ask you some questions. Okay, so do you know what Okay. is the advantage of Java? Sir, Java. Advantage. Any point of view you can explain here. Hmm? Vineet, any point of view? Do you wanted to explain here? Okay, so no problem. I will explain here. So basically, see, uh, where this one is having some several kind of advantage. Suppose that first one is platform independent. Platform independent. Okay, so basically here we can say that write once, run anywhere, run anywhere. Okay, this is the like advantages. Okay, and let's talk about another advantage. Let me just talk about simple overview about the प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, सपोज दैट कि जैसे आपका कोई भी जावा का कोड है, वो जब रन करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो किसके साथ इंटरेक्ट होगा, वो जेवीएम के साथ इंटरेक्ट होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन्स। ओके, if a java program compiled on the windows can run on the linux or macbook। ओके, ठीक है, तो ये चीज है एडवांटेजेस। सो बेसिकली अभी मैं जावा के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में जा रहा था, जो कि हमें नीड नहीं है यहाँ पे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज में जाते हैं। एडवांटेज तो हम देख चुके हैं, तो फंक्शंस के हम देखते हैं। केशव, कैन यू गिव मी अबाउट द व्हाट इज द डिसएडवांटेज अबाउट द फंक्शंस? डिसएडवांटेज अबाउट फंक्शन सर, इनका स्कोप लिमिटेड रहता है। हम्म, Okay. ठीक है। और ओके, ठीक है, एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू केश?
विनीत, डू यू हैव एनी अदर पॉइंट No, ऑफ व्यू? sir. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन हियर। सो एक्चुअली देखो, हम लोग क्या है कि एडवांटेज तो पढ़ चुके हैं। जैसे कि जैसे कोई कोड होता है, एक बार हम और जो है एडवांटेज के ऊपर देखते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शंस इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो है कहाँ जा रहा था, मैं एक्चुअली जा रहा था जावा का एडवांटेज या डिसएडवांटेज में। एक्चुअली मैंने अपने नोट्स बना रखा है ना, तो उसी नोट्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज में अच्छे से चलते हैं। अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई वी आर यूजिंग द फंक्शंस। ओके, अब हम यहाँ पे रियल देखने वाले हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द फंक्शंस। ओके, सो पहला है क्या, कोड रीयूजिबिलिटी। कोड रीयूजिबिलिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि हम एक बार लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं मेनी टाइम्स। ठीक है, हम बहुत सारे टाइम्स को यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। यूज मेनी टाइम्स। देखो एक्चुअली फंक्शन में क्या है कि थियोरेटिकल चीज को पढ़ना जरूरी है, थियोरेटिकल के साथ हमको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, क्योंकि फंक्शंस के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक बार ध्यान रखोगे तो उसके बाद आप कोड करते चले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट वी आर क्रिएटिंग वन ऐड मेथड, क्रिएटिंग ऐड मेथड, and we are just like printing something, printing welcome। ओके, और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, मेन 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 फंक्शन के अंदर हम इसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, ऐड को जस्ट लाइक कॉल कर रहे थे। ऐड को जस्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। ओके, या फिर क्या होता है कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सी, लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल व्हिच इज मेकिंग सेंस। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सपोज दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऐड मेथड and call it whenever you needed the additions। okay, so like जैसे मान लो कि आपने एक int add नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें आपने कुछ पैरामीटर पास किया है a कामा int b। ओके, आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न a प्लस b। ठीक है, अब इस आप मेथड को आप चाहे यहाँ पे ऐड कर लो, जैसे मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन में आप इसको यहाँ पे एक यहाँ पे एस ओ यू टी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करके कुछ यहाँ पे दे सकते हो, लाइक 2,5 यहाँ पे पैरामीटर पास करके इस तरह कॉल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर यहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है, मतलब एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा है, उसका यहाँ पे आपने क्या किया, लॉजिक लिख दिया। लॉजिक यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया, उसको लॉजिक को, लॉजिक के बाद आप लोगों क्या करना चाहते हो, उसको आप ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड 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 के बाद उस क्या करोगे, दैट इज पैरामीटर को आप लोग पास कर दोगे। ठीक है, पैरामीटर को जैसे ही पास कर दोगे, उसके बाद एक इसको वेरिएबल में एक वेरिएबल पास करके इसके बाद आप लोग प्रिंट कर दोगे। हाँ? तो यहाँ पे ऐड की फंक्शनैलिटी इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऐड का ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड रीयूजिबिलिटी का सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड, व्हाट वी आर यूजिंग सेकंड। ओके, रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशंस। ठीक है,
रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन। इसके बारे में विनीत ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। ठीक है। सो अवॉइड द राइटिंग द सेम कोड विच इज रिपीटेडली। ओके। तो यहाँ पे भी मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि कोई बहुत सारा कोड सेम चीज को हम लिख रहे हैं। ठीक है। एक कोई क्लास है, उसके अंदर हम सेम चीज को यहाँ पे भी लिख दिए, सेम लॉजिक को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ प्रिंट लगा दिया। ठीक है। और उसी क्लास के अंदर हम अदर मतलब कि सेम ही लॉजिक लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको अलग लिख रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे मान लो प्रिंट कर रहे हैं सेम चीज। तो ये क्या हो जाता है, कोड ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, कोड की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कोड की जो क्वालिटी होती है वो बेकार हो जाता है, और कोड दिखने में और कोड लिखने में भी सही नहीं रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक डुप्लीकेशन हम कर देते हैं, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे यही है कि अवॉइड द राइटिंग द सेम कोड व्हिच इज रिपीटेडली। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे कि हमने मान लो प्रिंट डिटेल्स नाम का एक कोई फंक्शन बताया है। ठीक है। मेथड्स, उसको हम कर सकते हैं, और एक मेथड को हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक प्रिंट नाम का वाइड प्रिंट नाम का कोई एक हमने फंक्शंस बनाया। ठीक है। यहाँ पे आपने प्रिंट में क्या लिख दिया, वेलकम लिख दिया। ठीक है। ठीक है। अब आप इस प्रिंट को एक बार, दो बार कॉल करो या तीन बार कॉल करो, तो आपको जहां पर जरूरत रहेगी ये वेलकम प्रिंट करके आपको देगा। ठीक है। यहाँ भी आपको वेलकम प्रिंट करके देगा, यहाँ भी आपको। ठीक है। वेलकम प्रिंट करके देगा जितनी बार आपको जरूरत होगी। और तीसरा क्या है, तीसरा जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, थर्ड वन इज इजी टू डिबग। इजी टू डिबग। ठीक है। इजी टू डिबग रहता है, जैसे कि जैसे एरर रहता है, तो उसको हम जो है कि इजिली सेपरेट मेथड में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एरर्स आर इजिली इजियर टू फाइंड बिकॉज लॉजिक इज सेपरेट इनटू द मेथड्स। तो फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा लॉजिक होता है ना, वो अलग रहता है, पर्टिकुलर मेथड्स में ही रहता है, तो हमको डिबग करना इजिली हो जाता है। ठीक है। कोई भी आप एक कैलकुलेट करने का कोई एक फंक्शंस बना सकते हो, उसके अंदर कुछ भी हो, तो दोस पर्टिकुलर फंक्शन इट विल गो। ओके। तो वहां से आप इजिली डिबग कर सकते। डिबग करने का मतलब ये है कि वी शुड फाइंड द बग्स। मतलब कि देखो जैसे कोई फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन मान लो कैलकुलेट सैलरी, सैलरी नाम का कोई फंक्शन है। ठीक है। अब डिबग करना है चीज, मान लो यहाँ पे हमने कोड लिख दिया है, कोई पर्टिकुलर चीज ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दिस इज द इंटरफेस, यूआई, यूआई इंटरफेस, यूआई इंटरफेस हमने कर दिया। यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा है। ठीक है। जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो दो एक्शन तो परफॉर्म हो, लेकिन तीसरा जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब हमको कोड में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद सारे वेरिएबल को हम चेक करके देखेंगे कौन सा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, उसका चेक करेंगे। जो लॉजिक जहाँ पे गड़बड़ होगा उस लॉजिक हम सही करेंगे, ताकि ये जो तीसरा टास्क है ये भी परफॉर्म करने लगे और आपको आउटपुट मिलने लगे। ठीक है। डिबग का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को मतलब कि एरर्स को ढूंढ के सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डिबग। ठीक है। ये एक डिबग का काम होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। कोड रीडेबिलिटी, हाँ। हाँ, वी कैन सेड improves रीडेबिलिटी। improves रीडेबिलिटी। ओके। सो मतलब कि अगर कोड क्या हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन बनता है। ठीक है। कोड बिकम्स
code becomes clean and easy to understand. Clean and easy to understand. ठीक है। तो जैसे आपको कोई भी कुछ भी लिखते हो, तो अगर आपकी फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग रहती है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आप अपने लॉजिक को लिखते हो। लॉजिक को लिखने के बाद जो कुछ भी आगे आपको लिखना रहता है, या फिर आपको कोई वैल्यू इनपुट देना है, तो आप मेन फंक्शंस को लिखते हो। उसके बाद वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, कौन से फंक्शंस में जा रहा है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हाउ दिस इज कंपाइलिंग, हाउ ये चीज एग्जीक्यूटिंग, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगती हैं। ओके। तो ये इम्प्रूव रीडेबिलिटी का एक अच्छा एग्जांपल है। ओके। एंड फिफ्थ नंबर इज इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन। ठीक है। इजी टू मेंटेन का मतलब क्या है कि हम अपने कोड को अपडेट करते रहते हैं। मतलब कि एक ही जगह पे हम कोड को अपडेट करते रहते हैं, और सभी मेथड्स क्या होते हैं, कॉल्स हो रहे होते हैं। किसमें, अपडेटेड लॉजिक में। मतलब कि क्या होता है कि अपडेट द कोड इन वन प्लेस, वी आर अपडेटिंग द कोड इन वन प्लेस, एंड ऑल मेथड्स कॉल यूज द अपडेटेड लॉजिक। मतलब कि जो कुछ भी हम लॉजिक को मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं, तो वो अपडेटेड लॉजिक के साथ सारा कोड कॉल हो रहा होता है, या फिर हमको आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि अपडेट द कोड, अपडेट द कोड इन वन प्लेस, इन वन प्लेस, इन वन प्लेस, एंड ऑल मेथड्स मेथड्स कॉल्स कॉल्स use the updated logic, use the updated logic. Okay. This is the five things which I have talked about the functions. ठीक है। ये हो गए एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो फार? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर। डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेथड्स कॉल हमको करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। एक्स्ट्रा मेथड कॉल्स। ठीक है। मतलब कि अगर जैसे मान लो हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं छोटे से परफॉर्मेंस के लिए, वो कभी कभी क्या हो जाता है कि अननेसेसरी, मतलब कि जैसे मान लो हम कोई मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि thousands of unnecessary methods calls but can slightly slow execution। मतलब कि जैसे मान लो बहुत सारे हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है। तो बस इसी का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट कोड क्वालिटी वाइज, अगर मान लो कोड अगर हमको कम लिखना है और सेम चीज को हमको पर्टिकुलर जगह यूज करना, दैट इज द ग्रेट थिंग। हम एक पर्टिकुलर फंक्शन लिए, उसमें लॉजिक लिख दिया और सेम फंक्शन को कॉल कर दिए मल्टीपल जगह, दैट इज द सेम थिंग। चलो ठीक है, वहां तक चलेगा। लेकिन अगर सेम चीज बहुत सारे 100 कॉल्स हैं, 100 मेथड्स हैं, 100 मेथड्स को मैंने कॉल कर दिया, तो वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि कॉलिंग मेथड्स मेथड्स adds a small performance overhead
ओवरहेड का यही मतलब है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 50 मेथड्स हैं, अब 50 मेथड्स को आपने कॉल किया, ठीक है, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है एग्जीक्यूशन में, बस इसका इतना है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि दूसरा में कह सकते हैं कि कैन मेक कोड हार्ड टू फॉलो, ठीक है, कैन मेक कोड हार्ड टू फॉलो, ठीक है। सो देखो फिर एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि टू मेनी टू मेनी स्मॉल मेथड्स, जो बहुत सारे छोटे मेथड्स होते हैं, तो उनको उन प्रोग्राम को नेविगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल टास्क के लिए, ठीक है, वी आर स्प्लिटिंग इनटू 20 मेथड्स, मतलब एक सिंपल टास्क के लिए हम मतलब कि एक स्प्लिट कर देते हैं, मतलब कि छोटे छोटे डिवाइड चीज में हम डिवाइड कर देते हैं 20 अलग मेथड्स में। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज होता है। एक लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे, टू मेनी मेथड्स, टू मेनी मेथड्स, ओके, टू मेनी स्मॉल मेथड्स, ओके, टू मेनी स्मॉल मेथड, टू मेनी स्मॉल मेथड may take the program, may take the program difficult to navigate, okay, difficult to navigate, ठीक है, ओके। थर्ड वन इज थर्ड वन इज पैरामीटर पासिंग। अगर मान लो पासिंग अगर मान लो हम बहुत सारे पैरामीटर को पास कर देते, तब फिर वहां पे क्या हो जाता है, कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, हार्डर टू अंडरस्टैंड, मतलब कि उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सो पैरामीटर पासिंग, ओके। पैरामीटर पासिंग में क्या है कि पासिंग मेनी पैरामीटर्स, मेनी पैरामीटर्स पैरामीटर्स कैन कैन मेक मेथड्स कॉल्स कंफ्यूजिंग, मेथड कॉल कंफ्यूजिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। और चौथा यहाँ पे क्या है कि मोर मेमोरी यूजेस, ठीक है, मोर मेमोरी यूजेस, ठीक है। सो ईच मेथड, मतलब कि ईच मेथड कॉल्स यूजेस स्टैक मेमोरी, मतलब कि सभी मेथड्स के लिए स्टैक मेमोरी यूज होता है, ठीक है। इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है, ईच मेथड कॉल यूज कॉल यूजेस स्टैक मेमोरी, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझते हैं। एग्जांपल मतलब कि अगर डीप रिकर्जन होता है, रिकर्जन मतलब कि एक तरीके से फंक्शन का ही पार्ट है, जो कि खुद को कॉल करता रहता है, जब तक बेस कंडीशन ना मैच हो तब तक ये नहीं रुकता है, ठीक है। जब बेस कंडीशन मैच हो जाता है, तब फिर ये क्या होता है, रुक जाता है। तो रिकर्जन वहां पे क्या होता है कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर का काम करता है। एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने रिकर्जन के बारे में पढ़ाया नहीं है। रिकर्जन जो है ये भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डीप रिकर्जन
डीप रिकर्जन कैन कॉज ए कैन कॉज ए स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ओके, तो अगर मतलब कि मतलब कि देखो, रिकर्जन में होता क्या है कि वो अपने आप फंक्शन को इटसेल्फ मतलब खुद से कॉल करता रहता है, अगर जब तक बेस कंडीशन मैच ना हो जाए, ठीक है। तो अगर डीप रिकर्जन होगा ना, तो वहां पे स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ सकता है, क्योंकि वो बहुत डीप में जाके चीजों को कैलकुलेट करता रहता है रिकर्जन में, ठीक है। तो इससे टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार गाइस?